Good morning, all of you. So today we are going to start with your next topic, that is poverty line. You must have heard, very often you must have heard people telling that he belongs to the BPL category, I belong to the APL category. So what is the BPL and APL? So it is below poverty line and APL is above poverty line. Now, you all must be wondering that what is this line? What is this poverty line? So basically, poverty line is an imaginary line which estimates that a person or the family is able to satisfy his or her basic needs or not. So your basic needs earlier when India got independent was food, shelter and cloth. Now it is food, shelter, cloth, health and education, which I've said you in the earlier video also I've explained that poverty is a moving goal. अगर आपने फूड शेल्टर और क्लोथ अचीव कर लिया, अगर सारे लोगों के पास फूड शेल्टर और क्लोथ आ गई, then some new addition will take place. So let us see the poverty line today. At the center of the discussion on poverty, it is usually the concept of poverty line. A common method used to measure poverty is estimated on the income or consumption levels. So it shows that बेसिकली किसी एक पर्सन को या किसी एक पॉपुलेशन को हम पॉवराइज कब कहते हैं, जब उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल आपको पता हो. ओके, सो व्हाट ही इज हिज इनकम एंड हाउ मच इज हिज कंजम्पशन. अगर वो 100 रुपीज अर्न कर रहा है तो क्या वो 80 रुपीज कंज्यूम कर रहा है या 50 रुपीज कंज्यूम कर रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी सी और वी एस्टिमेट दैट अ पर्सन इज गुड. I mean, a person belongs to an APL category or a BPL category. Like for example, if you take example of your family, if your father earns 30,000 per month, it is 20,000 he must be spending and 10 to 15,000 he must be keeping as you can say as a saving for any kind of scarcity. So you people belong to an APL category क्योंकि आपके पास savings होती हैं that अगर कभी जरूरत हो, अगर कभी scarcity हो, you can easily withdraw the money from the bank, which is not so in the case of poor people. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below the given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy the basic need is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary from time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepts the minimum social norms. For example, a person not having car in United States may be considered poor. In India, owning a car is considered a luxury. So the poverty line, जो आप poverty line की अभी बात कर रहे हैं, imaginary line, it varies from one person to another. It varies from one area to another. Okay, it's not that it is same everywhere. Like one example is given in your book. That if you do not have a car in United States, अगर आपके पास अमेरिका में कार नहीं है, you are poor. But in India, if you have a car, if you do not have a car, that is a general thing. Many people do not have. But in India, if you have a car, that symbolizes luxury. That means you are rich. Now, while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, cloth, footwear, fuel and light, education and medical requirement, etc. are determined by subsistence. These physical quantities are multiplied by their price in rupees. This present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on desired calorie requirement. So in India how it is calculated कि एक person को कितना earn करना चाहिए. एक मिनिमम फूड की रिक्वायरमेंट, क्लोथ की रिक्वायरमेंट, फ्यूल की रिक्वायरमेंट, लाइट की रिक्वायरमेंट, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट सबको पैसे में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे मान लीजिए आपको 300 चाहिए क्लोथ के लिए, 500 चाहिए फूड के लिए मंथ में. ओके, सो ऑन दैट बेसिस अब आप सोच रहे होंगे कि फूड की रिक्वायरमेंट कैसे वो सेट करते होंगे. इट इज अकॉर्डिंग टू द कैलोरी रिक्वायरमेंट. आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, विच वेरीज फ्रॉम अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन
अर्बन एरियाज, ठीक है। सो आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, उस बेसिस पे कितना फूड रिक्वायरमेंट होगा। मान लीजिए आपकी बॉडी को 2100 कैलोरी चाहिए, जो कि आपको 250 ग्राम फूड या हाफ अ केजी फूड सेटिस्फाई करती है, तो उतना वो कैलकुलेट करते हैं पर मंथ में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, लाइक 15 केजी, और उसको पैसे में कन्वर्ट करके, रुपी में कन्वर्ट करके, देन द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड। Now, food items such as cereal, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. अब ऐसा नहीं है कि चावल का कैलोरी अलग काउंट होता है, राइस का अलग काउंट होता है, कलेक्टिवली roughly काउंट किया जाता है. The calorie needed varies depending on age, sex and types of work that a person does. So you know calorie requirement varies. Age, अगर बूढ़े लोगों को आप देखेंगे, they require less calorie because they do less physical work. If you talk about sex, then a male, they require more calories because they do, it is believed that they do more physical work. Female requires less calorie. And types of work, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपकी calorie requirement कम है. Why? Because you are doing more the mental job than physical job. Whereas a manual laborer, that this is the reason why आप देखेंगे ना कि laborers बहुत ज्यादा खाते हैं, because you know they do more physical work, and more physical work you do, then more you require calories. Okay. The accepted average calorie requirement in India is 2400 per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. So 2400 calories per person per day requirement, एक आदमी की everyday requirement जितना भी वो खाना खाता है उसमें 2400 calories उसे लेनी चाहिए rural areas में, और urban areas में 2100 calories. Again, rural areas, people are more engaged in physical work, that's why they require more calorie, and in urban areas, people are employed more in mental work, that's why they require less calories. Now, since people live in rural areas, engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas is considered to be higher than urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in the food, in the terms of food grain, etc., is revised periodically, taking into consideration the rise in प्राइसेस. सो एवरी ईयर आपकी जो ये पॉवर्टी लाइन है वो उसे फिर से कैलकुलेट किया जाता है. व्हाई? बिकॉज हर साल जो फूड की प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं. बिकॉज यू नो दिस ईयर इफ राइस इज 20 रुपीज अ केजी, नेक्स्ट ईयर इट्स नॉट दैट इट विल रिमेन द सेम. सो आप पीरियडिकली 2 साल, 4 साल, 5 साल पे रिवाइज की जाती है पॉवर्टी लाइन को. ऑन द बेसिस ऑफ these calculation for the year 2011 and 12, the poverty line for person was fixed at 816 per month for rural areas and 1000 for urban areas. So how much was it fixed? 816. अगर एक आदमी एक महीने में कमा रहा है, that means he is above the poverty line. In urban areas, गांव में, और सॉरी इन रूरल एरियाज, गांव में अगर वो 816 रुपीज अर्न कर रहा है पर मंथ, देन ही इज अबव पॉवर्टी लाइन. एंड इन अर्बन एरिया, शहरों में 1000 अगर वो अर्न कर रहा है. नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग दैट शहरों में कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है तो अर्निंग ज्यादा क्यों है? बिकॉज यू नो इन डिस्पाइट कैलोरीज देयर आर वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू नीड टू बाय इन अर्बन एरियाज. ओके, लाइक यू हैव टू पे फॉर वाटर, यू हैव टू पे हाउस टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो आपको पे करनी होती हैं, which you have to not pay in the rural areas. Now, despite less calorie requirement, the higher amount of urban area has been fixed because of the high prices of many essential products in urban centers. In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about 4,080 per month will be below the poverty line, and a similar family in urban area would need a minimum of 5,000 per month to meet their basic requirements. Understood why urban areas में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है? Because there are various things or various taxes that you have to pay. The life is expensive in urban areas than in rural areas. Now, the poverty line is estimated periodically, normally every 5 year, हर 5 साल के बाद poverty line को रिवाइज किया जाता है, प्राइस गुड के प्राइसेस के अकॉर्डिंग रिवाइज किया जाता है हर 5 साल पे, by conducting a sample survey.
These surveys are carried out by National Sample Survey Organization NSSO. ये सर्वे कंडक्ट करती है, ये देखती है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी प्राइस बढ़ी है, फिर कैलकुलेट करती है और एक पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करती है. एंड दिस इज ऑल डन बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज NSSO. However, for making comparison between developing countries, many international organizations like World Bank uses a uniform standard for poverty line. Minimum availability of equivalent of $1.90 per person per day. Okay, so this what we were talking about, 816 rupees and 816 rupees and 1000 rupees, that was only for India. But internationally अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक जो है NSSO इंटरनेशनल लेवल पे नहीं काउंट करता है, रादर वर्ल्ड बैंक टेक्स द चार्ज एंड देयर आर वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हु टेक्स द चार्ज. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि वर्ल्ड लेवल पे क्यों जाना है. सो दे estimate you as an underdeveloped, developing and developed nation. Okay, so this is done by World Bank on the world level. Okay, now in the next video we'll be reading about the poverty estimates. So poverty estimates we'll read कैसे poverty estimate किया जाता है, कौन से कंट्री में कौन से ईयर में ज्यादा थी, कौन से ईयर में कम थी, कैसे कम हुई, कैसे डिक्लाइन हुई, एंड as well as we'll be reading about the vulnerable groups. Now vulnerable groups का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हिस्टोरिकली पास्ट में उनके साथ इतनी अट्रॉसिटीज हुई हैं, इतनी जातियां हुई हैं, दैट दे आर मोर क्लोज टू बीइंग पॉवराइज. हो सकता है उनके पॉपुलेशन में से कुछ लोग बहुत IAS और IPS बन गए होंगे, लेकिन स्टिल इफ यू टॉक अबाउट SC एंड STs, इफ यू टॉक अबाउट ट्राइबल पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मैक्सिमम जो उनके पॉपुलेशन है वो अभी भी पुअर है. एंड हाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम हेल्प, कैसे गवर्नमेंट उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती है थ्रू PDS सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन सिस्टम. All this we'll be doing in the next video. For now what you have to do is draw this table in your classwork copies. And today when I was going through your copies, all the notes and what is given in the videos, you need to make notes of this. You people are just submitting the question answers, which is not right. Apart from question answer, you need to submit the notes also, which is very very important. So today we have done the poverty estimates, and next video we'll be doing about the today we have done the poverty line. Next video we will be doing about the poverty estimates. Thank you.